Okay, today we will discuss about the second one method of calculating the arithmetic mean in case of the individual series. In first method, we have done the direct method in which simply the mean can be calculated by sum total of the value of all the items divided by number of items. Now the second one method is there, which is the assumed mean method. जनरली ये मेथड कब यूज होता है जब हमारी आइटम्स जो है वो बहुत ज्यादा होती हैं, लाइक वी कैन से द आइटम्स आर 100, 200, 500, 1000 और एनीथिंग. हमने इंडिविजुअल सीरीज में हमने डायरेक्ट मेथड कैसे स्टडी किया था जिसमें ओनली देयर वर द 10 आइटम्स. इट मींस व्हेन द data is small, in that case it will be helpful to use the direct method. But in case when the size of item is large, in that situation you can find out or you can use the assumed mean method. assumed mean as per the name indication, यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक mean assume कर लेते हैं. rather than calculating the direct mean, we can assume the mean. okay, it is also known as the shortcut method. यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए, सिंपली आई विल टेल यू इट विद द हेल्प ऑफ द डायरेक्टली with the help of an example. Firstly, I will tell you the formula of this. See, mean is equal to a plus sum of d divided by n. Mean is equal to a plus sum of d divided by n. Now the question arises, what do you mean by the x bar? X bar means arithmetic mean, right? X bar means arithmetic mean, as well as what do you mean by the a? A here, a means the assumed mean. जैसे कि मैंने आपको as per the name indication of the method I have told you that we will assume a mean here. हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक mean को assume कर लेंगे. ठीक है, a refers to assume mean. n के बारे में ऑलरेडी आपको पता है, दिस इज द नंबर ऑफ आइटम्स. अब यहाँ पर मेन जो क्वेश्चन अराइज होता है दैट इज रिलेटेड टू द डी. व्हाट डू यू मीन बाय द डी? The question arise here that what do you mean by the D? D refers to simply deviations. D की फुल फॉर्म क्या है? डेविएशंस. अब यहाँ पर क्वेश्चन अराइज हो गया कि डेविएशंस कैसे कैलकुलेट होंगी, राइट? I will tell you it with the help of an example. Try to understand it very carefully. See this, like there are the pocket allowance of 10 students. Find out the mean using assumed mean method. देखिए, now the number of students are 10. 10 students are there. What will we do here? See, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, pocket allowance are given. Now depend upon your wish any of the item. हमारा मेन आइटम क्या है? पॉकेट अलाउंस x, राइट? आप इनमें से कोई भी नंबर जो है वो एक एज ए अज्यूम्ड मीन ले सकते हैं. जनरली क्या प्रेफर किया जाता है, जैसे यहाँ पर 10 आइटम्स है तो 10 का मिड वन कौन सा होगा? 5th या 6th आइटम, राइट? आप कोई भी ले सकते हैं, डजंट मैटर. 5th, 6th, 7th आइटम मिड वन की लीजिए, बेटर इट विल बी. बट स्टिल दे हैव टेकन द 40 एज एन assumed mean. Now how you will calculate the D here? Question arise, D means जो हमारी मेन आइटम है x minus assumed mean. Assumed mean they have considered the 40. तो x क्या है? 15 here. 15 minus 40, 20 माइनस, आपको मतलब मेन आइटम्स में से, मेन सारी आइटम्स में से क्या करना है? 40 लेस कर देना है. 30 minus 40, 22 minus 40, 25 minus 40.
18 minus 40, 40 minus 40, 50 minus 40, 55 minus 40, and 65 minus 40. Okay, we have done this. After that, calculate the answers. These are in minus form, these are in plus. How to sum up it? आप प्लस वाली आइटम एक साइड पे ऐड कर लीजिए, माइनस वाली वन साइड पे आप ऐड कर लीजिए. आफ्टर दैट प्लस माइनस minus, the answer is minus 60. This is the sum of D. So, sigma refers to sum and D refers to x minus assumed mean. X is the main item. A refers to assumed means कि जो आप एक सीरीज में से कोई भी मीन अगर आप assume करते हो, that is the x minus assumed mean. Now what will you do? You will put it into the formula. How? X is equal to, mean is equal to x plus sum of, mean x bar is equal to a plus sum of d divided by n. A plus sum of d divided by n. A is assumed mean 40, sum of d is minus 60, n is how much? Minus 60 divided by 10 number of items are there. So it will be equivalent to minus 6. Plus minus, minus 40 minus 6 is equal to 34. This is the arithmetic mean using which method? Using assumed mean method. Arithmetic mean using assumed mean or shortcut method.